Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we will do analysis of microfinance sector. And this microfinance sector, if I'm analyzing all these companies like Credit Access Grameen, then Muthoot Microfinance, Spandana Spoorty, Fusion Microfinance, Satin Credicare, and Armaan Financial. So these are the companies which we are going to analyze today, and some of the companies are actually turning out to be good. And basically all with the new guidelines which were issued last year, जब ये माइक्रो फाइनेंस में इशू हुआ था, न्यू गाइडलाइंस वेर इशूड बाय द माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन, एंड पोस्ट दैट ऑल दिस कंपनीज वेयर इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग देयर बैलेंस शीट. एंड ये सब लोग जो क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली दे आर शेडिंग देयर ओवरग्रोन बेसिकली पार्ट्स. जो पार्ट्स में स्ट्रेस था, दे आर एक्चुअली टेकिंग राइट ऑफ फॉर दोज पार्ट्स. They are taking huge provisions on those stressed NPAs. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो प्रूनिंग चल रही है ना, बेसिकली इसको हम प्रूनिंग ही बोलेंगे. जो गार्डनर होता है, जैसे जो जो कोई डॉर्मेंट स्टेज में जो भी पेड़ होते हैं उनको प्रूनिंग करता है, प्रॉपर प्रूनिंग करने के बाद एक अच्छे शेप में पौधा आ जाता है. बट उसके उसमें क्या होता है ना, करंट एयूएम जो होता है विच इज इन दिस कंपनीज, दैट ऑल्सो गेट्स वो भी श्रिंक हो जाता है. दैट्स वाई एयूएम का ग्रोथ जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है. बट ओवरऑल आप अगर देखोगे इन सारी कंपनीज में, ऑल दिस कंपनीज आर इन अ शेप ऑफ इन अ फेज ऑफ रीबिल्डिंग, and they are going towards the positive positive direction, which was affected in the last 2 3 quarters. So let's get started with the first company. This company already we covered, I think 2 times we covered this company. We have correlated the price with the parameters like profitability parameters like ROE, ROA, and we are going to do just that. For all these companies. So if you see here, just the 4% growth here. So for all these companies, I'm not going to compare all these financials here, because what is important is to understand the profitability matrix, to understand the asset quality, right? वो सब चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर कोरिलेटिंग वेल विद द प्राइस बेसिकली. ऑल राइट. तो इन सब अगर कंपनीज में आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी साइड में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हैज डन वेल, विच इज 100% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ इन प्रॉफिट. देन मुथूट माइक्रो फाइनेंस विच इज लाइक 400% क्वार्टर क्वार्टर increase in the profitability. Spandana Spoorty still a loss making entity. Fusion Microfinance still a loss making entity, but losses have been narrowed. Then Satin Credit Care, again very good recovery, which is 23% year on year PAT growth. And Arman Financial negative में था, now it's positive growth they have posted basically. Now let's understand credit access ग्रामीण. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने इन सारी कंपनीज को 4 पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया. अगेन टू गो विद लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिलेटेड मैट्रिक्स वी विल एनालाइज. देन वी विल एनालाइज द लोन बुक का ग्रोथ क्या है एंड डिसबर्समेंट का ग्रोथ क्या है, and we'll look at the comments on the basis of that. Then asset quality और रिवर्सल ट्रेंड यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? फॉर एग्जांपल GNPAs लाइक पार ट्रेंड्स, पार 0, पार 30, पार 15, पार 90, यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेंड दिख रहा है क्या? एंड देन FY26 का गाइडेंस, एंड विल कंक्लूड दिस वीडियो विद कंपेयरिंग ऑल दिस कंपनीज, और कमेंट्री एक बार देख लेंगे. तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में इफ यू सी, प्रॉफिटेबिलिटी इज सॉलिड, 100% कॉटन कॉटन प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ दिस प्रॉफिटेबिलिटी दे हैव अचीव्ड in spite of taking the massive accelerated write off around almost 680 crores in Q2. ये जो stressed asset है उन्होंने, दे आर कॉलिंग दिस एज लीगेसी बुक. जो भी पुराने एनपीएस थे वो सारे उन्होंने राइट ऑफ कर दिए, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे अचीव्ड दिस ह्यूज पैट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रूव हुआ है. और जो भी ये लोग नए बेसिकली क्लाइंट्स ऐड कर रहे हैं, नए कस्टमर्स ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम देम द रिकवरेबिलिटी और रीपेमेंट जो होता है वो दैट इज हैपनिंग ऑन अ गुड साइड. दैट्स व्हाई the net interest margin is increasing, ROAs are stabilizing, they are moving in a positive direction, ROE is also moving up in a positive direction. So if you remember my last video, they have already given a guidance on this one, ROA and ROE, and they have given our AUM guidance of around 14 to 18% for FY26. So what this company has said in the last 2 quarters is that first half is going to be stressed, but from second half they are going to pick up. So that is the story for credit access gram. If you see लोन बुक में आपको ज्यादा कुछ ग्रोथ दिखेगा नहीं. 3.1% ईयर ऑन ईयर Q2 में ग्रोथ आया है, बिकॉज Q2 इज एक्चुअली सॉफ्टर क्वार्टर फॉर ऑल दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, ऑल दीज हाउसिंग
फाइनेंस कंपनी, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो वीडियो मैंने बनाया था, वही स्टोरी है. It's the same story which is continuing here, which is Q2 is softer here, but still in spite of that, this company has achieved disbursement of around 32% year on year का disbursement इनको मिला है. एसेट क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो GNPAs आर ऑल्सो गोइंग डाउन टू 3.65%. Actually, they touched at 5%, I think few quarters back, and now it is down to 3.6%. Collection efficiency at 94%, and guidance of AUM is around 14 to 18%. So this is all about credit access Grameen. If I have to summarize this, it's a strong business momentum at the moment, and second half looks to be better, and it is going to drive the profitability. And we have witnessed just that in the Q2, in spite of taking having the largest, I would say, uh, मैसिव इनका जो राइट ऑफ लिया है, उसके बावजूद यहाँ पे अच्छा खासा पैड ग्रोथ यहाँ पे मिला है. सो दैट इज अ गुड साइन एक्चुअली, राइट. सो growth AUM is 14 to 18%. So let's move on to the next company, that is Muthoot Microfinance. Now this company, if you see, I'm not talking about the sales growth basically, but PAT growth यहाँ पे quarter on quarter is solid. If you look at that, NIM is also up, that is 12%. ROA and ROEs are also up, that is stabilizing at 1% and 4.6% respectively. So this is the strongest quarter on quarter profit movement in this company which they have witnessed. If you look at the loan book, only 0.3% year on year decline. That means the decline in the there was consistent decline in the loan book, but this decline has been slowed. So the pace of decline has been slowed. Just like हम लोग जो pace of sales growth monitor करते हैं, that way the pace of the AUM decline has been slowed down, and it is just marginal. And this shows that loan book जो उसका जो भी खराब हो रही थी वो स्टेबलाइज हो रही है. तो और यहाँ पे एक और चीज है कि जो डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट भी इंप्रूव हो रहा है. अगेन, GNPAs आर इंप्रूविंग, दे आर गोइंग डाउन टू 4.6% फ्रॉम द प्रीवियस लेवल्स. एंड FY26 का उन्होंने गाइडेंस दिया, ऑलमोस्ट 5 to 10% ग्रोथ दे कैन एक्सपेक्ट. बट this was the guidance, but now they are thinking, now they have given that they can exceed this growth guidance of 5 to 10% of AUM growth. So that is all about Muthoot Microfinance. 5 to 10% of the AUM growth, and could be north of 10%. So we need to track Q3 for that in order to understand that. So far, credit access is winning here. Now let's move on to the next, that is Spandana Spoorty. Now this is a loss making entity, if you see here, but what is the story here? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो almost like 250 crores का लॉस इन्होंने लिया है. निम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, दैट इज गुड. ROA एंड ROE इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंप्रूविंग. बट इफ यू सी हियर दैट यहाँ पे इनकम और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं, PPOP, दे वर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग ऑफ द AUM बुक. तो लोन बुक जो है वो श्रिंक हो रहा है. जो मैंने आपको पहले वो प्रूनिंग गार्डनर का जो एनालॉजी मैंने बताया था, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर. और ये हो रहा है लास्ट 3-4 क्वार्टर से हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक हिट यहाँ पे इनको मिला है. कंसिस्टेंट ये लोग राइट ऑफ्स ले रहे हैं. बट व्हाट दिस गाइज आर डूइंग, बिकॉज ये जो गार्डरेल नया आया था उसके बाद स्पंदना स्फूर्ति हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द न्यू लोन बुक विच इज बेस्ड अपॉन द न्यू क्रेडिट रूल्स, राइट. तो वो जो न्यू बुक है, that book performance is very robust, that is 99.9% of net collection efficiency वो बुक में है. Now how much that book is contributing to the total revenue? Almost around 28 to 30% I think contribution है वो book का. And that book is going to drive the future for this company. So that is point number one. Disbursement, if you see here, massive disbursement, 934 crores का disbursement, which is plus 233% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ पे मिला है. तो सिक्वेंशियल पिकअप इन द डिसबर्समेंट यहाँ पे मिला है. एंड एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो इंप्रूविंग, दैट इज 4.997%. एंड बिकॉज ऑफ ये जो राइट ऑफ ये लोग ले रहे, तो ये कंसिस्टेंटली अपनी जो पुरानी बुक है उसको धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं, और नई जो बुक है उसको ये लोग बढ़ाएंगे अंडर द न्यू क्रेडिट रूल्स, जो मैंने आपको आई थिंक लास्ट वीडियो में समझाए थे कि पहले बोरोवर्स के साथ लाइक बोरोवर्स लाइक चार चार कंपनी से लोन लेके वहाँ पे ये लोग भी उनको लोन दे रहे थे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, तो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आ गए हैं. FY26 का जो गाइडेंस है, विच इज सॉलिड गाइडेंस, दैट इज 20% AUM ग्रोथ.
and strong performance from the new loan book. That's what they are expecting. Let's see how they are going to do that, because FY26 again, it's going to be a rebuilding year for this company, and pace of the disbursement is also increasing, which we have actually witnessed in this particular quarter, and that's why they are given a growth guidance of around 20% AUM growth. तो देखते हैं वो कितना करते हैं. So far, this Spandana Spoorty has exceeded the guidance of credit access Grameen, which was like 14 to 18%. So this has taken a number one position right now so far. Let's look at the Fusion Microfinance. So what is happening here in Fusion Microfinance is that again, it's a loss-making company, but losses have been narrowed. Losses narrowed because they are also, cleaning up the balance sheet. Almost 22 crores का लॉस है. नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 56 बेसिस पॉइंट्स से इम्प्रूव हुआ है. सो दैट इज गुड पॉइंट. इफ यू सी द लोन बुक, यहाँ पे तो लोन बुक तो सीधा सीधा डिक्लाइन ही है. ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द लोन बुक इज हैपनिंग. एंड दैट लोन बुक इज बिकॉज ऑफ द अगेन वो जो स्ट्रेस था माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स में, वही उसी की वजह से ये लोन बुक यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. बट what they are doing is they're kind of diversifying their loan book into MSME, and their plan is to scale up this MSME business. So microfinance का loan book तो रहेगा ही, but they are also increasing the loan book and exposure to the MSME, which is kind of a much secured loan as compared to the microfinance, right? So that is another point here. Again, asset quality is improving, and what guidance they are giving is that they have not given proper guidance here for FY26, but they are saying FY26 could be a year which will build a basic foundation for FY27. So FY26 is like a turning point. It's like a pivot point, and they are guiding that the AUM का growth जो है उसमें decline will continue in the next upcoming quarter like Q3, and in Q4 it will stabilize, and then maybe in the FY27 they will start increasing the loan book, and that too MSME will fire basically. So that is the take. So let's track this company, because microfinance, they're cautious on this one. Then let's look at the next company, that is Satin Credicare, which has shown 19% sales growth with 23% PAT growth. Profitability यहाँ पे है. So it's like NIM भी increase हो गया almost like 14% से 14% है, which is up from the previous year on year quarter. ROA is also kind of stabilizing at 6.65%, and ROA at 6.56%. Historically, they were close to 15%. Now we'll have to do that journey from ROA of 6.56% to more than 15%, and that's what we have to see here. Loan book, if you see 12% of the AM loan book, AM growth that they have done, and GNPs are also improving. Par trends are also stabilizing. So what is happening here is that financials are stabilizing. is ये जो satin credit care है उसमें 85% of the loan book. Now previously almost like 99%, if I'm not wrong, is was exposed to the microfinance sector, which is kind of a mix of secured and unsecured, mostly unsecured. But now they have reduced that exposure. Now it has reduced to 85%, and remaining 15% is exposed to the affordable housing loans and the MSME loans portfolio. So that is one change which is happening here. FY26, they're projecting a single digit growth in AUM, and in FY27 it could be a double digit growth. Now I don't know the number, but let's track this company. This is also a good company, good management, and solid performance they have given in the past. So let's track this one. Last company which we'll analyze in this particular video is this Armaan Financials. If you look at this one, so it is like again it is also in a phase of positive PAT. If you see, significant PAT growth has been observed quarter on quarter here. Net interest margin have been increased to 13%, right? And ROE has also been improved by 3.7% in this particular quarter. Now quarter on quarter growth is 3.7%. Now what is happening here? The narrowed losses sequentially. So the microfinance segment showed a marginal loss of only 90 lakhs.
जो इम्पेयरमेंट ये लोग ले रहे थे ईयर ऑन ईयर, दैट इम्पेयरमेंट हैज बीन ड्रॉपिंग फ्रॉम लाइक 89 crores to now just 38 crores, which is showing that healthier repayment behavior of their customers. That means what, जो भी ये लोग लोन अभी नया दे रहे हैं वो उसमें अच्छा खासा रिपेमेंट बिहेवियर है कस्टमर्स में, और कोई ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे है नहीं. बट देर आर सम पॉइंट्स which are very important to highlight here. AUM growth, generally I think, if I'm not wrong, this company used to grow at around 30 to 35% का AUM का growth ये लोग करते थे. But now in the recent con call they're highlighting some stress signals, and they're more focused on the quality customers. They're not focusing on the growth, but they're focusing on the quality of the customers, and that's why in the near term growth may be hampered. So that is one point which investors needs to take into account. So growth may not be like 30 or 35% plus, but it could be much lower than that. Maybe let's look at the current growth and then we can discuss more. So if you see here, disbursement like 335 crores in quarter two they have done. So what they have done intentionally is that microfinance के जितने भी disbursements थे वो उन्होंने moderate कर दिया, अंधाधुन disbursement देना start नहीं, मतलब बंद कर दिया. एंड बहुत कॉशियसली ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कितना कंट्रोल्ड वे में डिसबर्समेंट दे रहे हैं. बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग, बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग करके दे आर लाइक गिविंग द लोन्स टू द इंडिविजुअल्स और द जो ग्रुप्स होते हैं उनको. नाउ इफ यू सी एसेट क्वालिटी विच हैज इम्प्रूव्ड, एंड नाउ लेट्स गो टू द करंट. उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में ऑलमोस्ट लाइक 25% का AUM ग्रोथ किया इन Q2 FY26, and MSME में almost like 29% का growth था. But what they are saying, they are not really planning to push the disbursement in both the segments like MSME and microfinance, and they are also experiencing some stress level in the MSME. So this is good point. Actually अरमान का जो कॉन कॉल होता है वहां से ऐसे एक दो दो पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं. If you have seen all the companies, nobody has highlighted this particularly, but Arman has highlighted this one. So they are seeing this MSME stress, and this could be, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रम्प टैरिफ है, और हम लोग देख भी रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में ट्रम्प टैरिफ की वजह से यहाँ पे उनको बेसिकली उनको बिजनेस में इम्पैक्ट तो हुआ है, एंड दैट्स व्हाई they may not be able to repay their loans on time, and that's what actually अरमान को यहाँ पे दिख रहा है, सेंस हो रहा है. That's what my guess is on this one. So एकदम गंगो होने की भी जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्टर में कि ये एकदम टर्न अराउंड सेक्टर हो चुका है. But the bottom line is this, that all these companies are definitely cleaning their balance sheet and they're ready for the next growth. So how do you screen basically good companies or good management and good businesses from all these companies? If I have to sum up, then definitely just because the sheer nature of the business and the transparency with which the credit access Grameen always come up in the every quarter, हर बार बहुत डिटेल्ड क्लैरिटी पार 0, पार 15, पार 30 लेवल्स पे, GNPA लेवल पे ईच स्टेट में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हर स्टेट वाइज वो लोग जो देते हैं ना डिटेल्स, दैट इज वेरी गुड एंड दैट गिव्स कॉन्फिडेंस एक्चुअली. सो वेरी डिटेल्ड गाइडेंस उन्होंने दिया है AUM का. इट इज 14 to 18%. सो my I will go with Credit Access Grameen at the moment, but I will keep tracking on Spandana Spoorty because the इनका जो गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, 20% AUM ग्रोथ है, एंड व्हाट दे आर बिल्डिंग बेसिकली न्यू बुक विच विल स्टार्ट फायरिंग, एंड होपफुली वहां पे ज्यादा GNPAs ना हो. So that is one, and then I will keep tracking the Arman financials also. So that is my take on this one. I hope you like this video. I hope I have added some value add here. And if you think that some value addition has been done, then please like, share, and subscribe this video and discuss with your friends also. Thank you so much for watching this, and I'll see you in the next video. Thank you so much.